Yuva. And also more importantly, Harshit, what is more nice about this series for me is, again, that is going to reiterate the Aage Ka Rasta. Yeah. You know, for our women talent that is going to be happening. This is definitely another big step in forward because we've known what the men can do now with the Aage Ka Rasta. Now the women, yeah, they are the one who shows the Rasta. By the way, women shows the Rasta. Let us tell that first. You know, we will just follow their path. So we are wanting the women to show us the Rasta. जी हाँ बिल्कुल। और पहला मैच बता देते हैं, पहला मुकाबला खेला जाएगा अरावली एरोज बनाम हिमालयन थार्स। दो बड़ी टीमें, आप इंतजार कीजिएगा जब ये दोनों टीमें यहाँ पर मैच पर देखने को मिलेगी। आपने बहुत बार उनका नाम सुना होगा, बहुत बार कबड्डी में परचम लहराता वो मिला होगा, बट यहाँ जो एक बार फिर से प्लेटफॉर्म है, अ प्लेटफॉर्म वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटीज। और चलिए, जैसा आपने बताया कि मैन जो है शोकेस करेंगे जिस तरह से आगे, तो क्या विश कर रहे हैं वो हमारी वुमेन्स को, आइए वो जान लेते हैं। मेरा नाम रोहित यादव है। हाय, मेरा नाम रणबीर ठाकुर है। मेरा नाम सोनू राठी है। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक उमर है। हाय, एम पेर दिनेश कुमार। हाय दोस्तों, मैं योगेश नागर, पैरा पेंटर कोच। என்னோட பேர் முகிலன்। मेरा नाम है आशीष भाटी। राम राम सर। मेरा नाम युवराज चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन राठी है। हाय, मेरा नाम मोहित है। ऑल द बेस्ट फॉर गर्ल्स, अच्छे से खेलना और ट्रॉफी जीत के आना। 20 तारीख से होने वाली JSG वुमेन युवा कबड्डी सीरीज में खेल रही है। जयपुर में आयोजित हो रही है स्वाई मान सिंह स्टेडियम में। तो कृपया आप सभी उनको सपोर्ट करें और उनके मैच जाके देखें। फैन कोर्ट पे लाइव। ऑल द बेस्ट गर्ल्स, अच्छा खेल के आना और इस बार ट्रॉफी करके लेके आना। और इस सीजन हिमालयन थारी ट्रॉफी उठाई। ऑल द बेस्ट गर्ल्स। उसको सभी प्लेयर्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं हिमालयन थार के सभी लड़कों को ऑल द बेस्ट चाहता हूँ कि इस बार हिमालयन थार को ट्रॉफी उठाए। फिलहाल तो ऑल द बेस्ट। जिस तरह हमें प्यार दिया है उसी तरह हमारी छोरियों को प्यार दे। जो अभी तक पैरा पेंटर के लिए लड़के नहीं कर पाए हैं, वो हमारे लड़कियां करके दिखाएं। मेरी और हमारे सभी की तरफ से आपके लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत अपना इरादा करो। तो युवा कबड्डी सीरीज मजबूत इरादों के साथ आ चुका है लेकर JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 के साथ। और पहला मुकाबला दो बड़ी टीमों के साथ यहां पर होगा आगाज और यहीं पर होगी शुरुआत। तो समय है ओवरऑल 872 मैच की तरफ यहां पर बढ़ने का। और ये सहारा एक बार फिर से पिंक सिटी जो हमारे साथ करेगा आगाज। तो लीजिए, सीट की पेटियों को बांध लीजिए और कर लीजिए तैयारी, क्योंकि सबसे पहले आ रही है दी होम टीम करने सबका स्वागत। गिव इट अप फॉर अरावली। शूरवीरों की भूमि पर करते हैं हम स्वागत। हिमाचल से आ रहे हमारे थार्स का है पूरी तरह तैयार, डट चुके हैं, लड़ने के लिए हैं बेकरार। आ रहे हैं कीजिए सवारी करने हिमालयन थार। आदर्श और जिन्होंने हमेशा कबड्डी और वुमेन्स को एक स्तर तक पहुंचाया है जिस स्तर की आप बात करते हैं। तो चलिए, हम आप सभी की जोरदार तालियों की अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मृदुल गहलोत जी, फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ राजस्थान एंड मेनी मोर फेदर्स इन हर कप, ऑल्सो वाइफ ऑफ लीजेंडरी लेट जनार्दन सिंह गहलोत। बहुत बहुत अभिनंदन मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की ये धरती राजस्थान जिसे शूरवीरों की भूमि कहते हैं। और अब राजस्थान एक अभिन्न हिस्सा है भारत का और हम तहे दिल से
साधुवाद और अभिनंदन करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हुए ले चलते हैं नेशनल एंथम की तरफ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आइए अरावली एरोज की अगर हम बात करें तो बात करें इन टीम की। निधि शर्मा वहां पर मौजूद है, सुषमा शर्मा, भारद्वाज, मनप्रीत कौर मौजूद, रेणु देशवाल, रजनी गुलिया और मुस्कान मलिक और ज्ञानू ठाक्कर वहां पर मौजूद होंगे। राखी तंवर, किरण, निकिता, पूजा और सुमित्रा वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशंस में नजर आएंगे। अरावली एरोज की अगर आप बात करें तो एक बहुत ही कमाल की टीम आपको नजर आती है और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आपको वहां मौजूद मिलते हैं जहां आपको बहुत अनुभव भी दिखाई देता है। Yes, definitely. And as I said, once again, Harshit, this is a fabulous, fabulous setup here at the Savai Mansingh Indoor Stadium. And everybody watching live on Fan Code, once again, this is the JSG Women's Yuva Kabaddi Series. And Jyoti Kumar and Champa Thakur in the corners there for the Himalayan Tahrs. And Kiran Thakur, Bhavani Devi and Kritika are there in the raiding department. And Dimple Rampal and Pushpa are there in the cover defenders. And I'll tell you what, Pushpa is one big player that we'll have to watch out for. I'll tell you more about that as well, as Tanu, Kavita, Riya, Diya and Bandana Kumari will be in the substitution lines. Right, so along with them, I also have to mention the coaches as well, Arshit, as Sohan will be there for the Aravalli Arrows and Satvir Kaur is there for the Himalayan Tahrs. And speak of Pushpa, I've seen her in the Khelo India Games. And what a all-rounder she is. And I will go ahead outside and say, shout my throat out and say that she's an all-rounder, because as you know, Harshit, that I really rarely say players as all-rounders, but one all-rounder in front of us as well. जी हाँ, मृदुल गहलोत जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल आपने सही शब्द का उपयोग किया। ये भी एक ऑलराउंडर है। जिस तरह से अपनी पर्सनल और जिस तरह से अपने व्यवसाय की बात कर लें तो जिस तरह से मैनेज कर रखती हैं और जिस तरह से कबड्डी में एक इंस्पिरेशन के तौर पर, क्योंकि जनार्दन सिंह गहलोत साहब तो कबड्डी में जब आप बादशाहों की बात करेंगे तब एक तजुर्बेकार व्यक्तित्व की बात करेंगे तब आपको हमेशा नाम मौजूद मिलता है और उनकी पत्नी श्री भी हैं। तो अब आइए जयपुर की तरफ हम स्वागत करते हैं और ले चलते हैं काउंटडाउन की तरफ, करते हैं अभिनंदन। Manpreet there right up in the front and saying
the countdown as 1, as Akshay Desai will go give the go-ahead to Himalayan Tahrs, as Aravalli Arrows had won the toss. And yeah, there she comes, Pushpa. We've seen so many times in the Khelo India games that she is a big all-rounder. I've seen her in the Khelo India University games and also in the Khelo India games, and also she's been a medalist for India, and most of the times as she tries to get that bonus point. Hope she does not go back later as Muskan comes in from the right corner. And Arshit, one thing we'll have to make everybody understand is, like the men, the women Kabaddi is not very position oriented and is not very player oriented, because as I said, Pushpa, she is a big all-rounder. So she can raid, she can defend. So does Muskan. See, she is in the right corner, but she can raid a lot as Jyoti Kumari now comes in. So this is setting the mood in for people watching live on Fan Code, saying because we've always spoken about in the men's edition, we've always spoken about one player not doing all the things. One player has to do one thing, especially Anuj Sen as a big example. So that does not exist too much in women kabaddi. There, Renu running attached gets that first point. We are up and away, Harshit, in your city, Jaipur. जी हाँ, पहला अंक यहाँ पर आ चुका है। अरावली एरोज ने यहाँ पर खाता खोल दिया है। लेफ्ट कॉर्नर चंपा को वहाँ पर शिकार बनाया, और रेनू देखिए जिस तरह से एक लंबा कद भी है, साथ ही साथ स्ट्रेच कितना बढ़िया किया वहाँ पर, अपनी लेफ्ट लेग को जिस तरह से स्ट्राइड करके आगे निकाला। और नंबर 8 जर्सी चेतन चौधरी को हमने देखा था पिछली मर्तबा, वो राइट कॉर्नर पर थे और दर्शकों ने उन्हें प्यार दिया, ड्रीम टीम में थे। बट यहाँ नवीन, ये ड्रीम सीरीज हो सकती है, JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज। और जो बात कर रहे थे ना आप मुस्कान मलिक और साथ ही साथ कल्याण पुष्पा की, जिस तरह से दोनों खिलाड़ी वहां पर एशियन गेम्स 2023 में वहां मौजूद थे, यहां पुष्पा शुरुआत कर चुके हैं। डू और डाई रेड है नवीन। Yeah, first do or die raid, and even in the Khelo India games, I was telling her that Pushpa jhukega nahi. Even now, she does not go down. She gets a point and gets into the lobby. And that line had become so famous, even from the movie Pushpa. Pushpa herself came up and probably spoke to me in that Khelo India games once and said, yes, main bilkul jhukegi nahi, and we will go ahead with all the points. Right, like this. See how she attacks that right corner, gets into the lobby. And also 11/8 is the mat size here that we'll have to be very clear about, because 11 is what the length is and the breadth is what is 8 for the women's edition. And of course we all know that it's going to be a 30-minute game. Running hand touch again, gets right in. So easy, so cleanly done. निधि इस बार आई हैं और मल्टीपल स्टार्स नजर आ सकते हैं नवीन। देखिए मल्टीपल टाइम्स में मल्टीपल रीडर्स आई हैं। यहाँ देखिए पिछली बार रेनू लेफ्ट रीडर थी, इस बार राइट रीडर आई और अटैक करती चली गई। पहले कवर से बचे और उसके बाद राइट इन पर शिकार बनाया। तो अरावली एरोज के पास वहां पर मल्टीपल रीडर्स हमें नजर आ रहे हैं नवीन। As I said, Arshit, it is the USP, the upselling point of women kabaddi. Everybody does everything. See Pushpa, she'll come in, she'll try for the bonus again, and they will rely on Pushpa a lot, the Himalayan Tahrs. And that do or die raid was that 1 point she got on the running attach, and now see, look at the bonus point. She gets that again. So 2 raid points for Himalayan Tahrs have come in from Pushpa as well. So for Manpreet and Muskan, the only point is to stop Pushpa. And of course from Himachal Pradesh, Pushpa, we saw what she did in the Khelo India University Games and also the Khelo India Youth Games, where Himachal Pradesh was there, Harshit. She was there in the finals. They did it so very well. You know, when that happened there in Lucknow, it was fabulous. It was just amazingly organized and done well, of course, from Sports Authority of India and everybody. But Pushpa was the star, and of course Muskan, she's also there, and lovely to see them come here into our Yuva Kabaddi series and play the league format as as a franchisee series. That's very good. Again, there's another point. Now the equalization comes in. It's a very, very weak tackle coming in from that left flank. यहाँ पर रजनी को बाहर जाना पड़ा है। आइए देखते हैं एक बार फिर से रिप्ले के दौरान कि क्या हुआ था। यहाँ टोटा हुआ था इनकी पोजीशन पर, और उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश भी की कि चलिए टोटा जब हो चुका है तो प्रयास वहां पर किया जाए। 3-3 बराबरी पर स्कोर हो चुका है। निधि और नवीन, हम बात कर रहे थे निधि, मुस्कान और रेनू की, तीनों ही रेडर्स बहुत अनुभवी रेडर्स भी है। एशियन गेम्स में 2 खिलाड़ी वहां पर 2023 में अपना परचम लहरा चुकी है। रेनू जो नेशनल गेम्स बहुत अच्छे खेले, 37 नेशनल गेम्स, वहां पर जिस तरह से उनमें भी वो अग्रसर थी और जिस तरह से ऐश्वर्यशाली उन्होंने प्रदर्शन दिखलाया वो बहुत कमाल था। अब निधि
क्या ज्यादा अंदर जाएंगी नवीन? मुझे अभी भी पहले टैकल पॉइंट का इंतजार है। All right. That kick was a little stronger one on Bhavna. From that left in again, the position of the ankle hold. There. Dual-minded. The lift of the leg was right on time and not the ankle hold position on the wrists. Yes, Bhavna, Pushpa, they've played a lot together. I'll tell that. Because coming in from various aspects, or say even the nationals and everybody, see, as I said, 67% already is right strike rate, and she is the go-to getter. And when I was seeing her for the first time, and I think that was in Ahmedabad before Lucknow. Once again, a couple of points. Yes, as you said, Arshit, still no tackle point, but it's all because of Pushpa going ahead and confusing the defense. Once again, Rajni from that left in has to go back. एक बार फिर से उनका शिकार बनाया, तो पुष्पा पसंद कर रही है वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को अटैक करना, लेफ्ट इन को अटैक करना। कवर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नवीन अब, और ये पहला मैच है और पहली मर्तबा ये खिलाड़ी मौजूद है। नर्वसनेस नवीन थोड़ा सा बिल्कुल बनती होगी हमें, यही जयपुर, हालांकि मैदान दूसरा था, बट हमने देखा है वहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी नर्वस होते हुए। प्रतीक भैया जब शुरुआत कर रहे थे उनमें भी थोड़ा सा एक दो मैच होने लगे थे, बट यहाँ कवर्स अब नर्वस नहीं होगा, बल्कि नर्वस कर दिया जाएगा अपने अपोनेंट को। सुषमा को बाहर का रास्ता दिखलाया, प्रॉपर फ्रंटल और कॉम्बिनेशन भरा टैकल नवीन। And not easy for a tough raider like Sushma. She is a strong raider there. She could have actually broken the chain and gone through, but changing the direction and putting her back on the mat, that was so nice. And this is good. Bhavna comes in for the first raid of this match, and I've seen Bhavna Pushpa hunt in pairs like this. What a way to take away her right leg away. Muskan from the right corner wanted to go for the thigh hold and has to go back. This is what, Arshit, makes Himalayan Tahrs so very strong. Bhavna, Pushpa, they hunt in pairs and like this. भावना ने अपने आप को बहुत अच्छा बचाया, बैकट्रेल करना जिसे हम कहते हैं। और जब हम रीडर्स की बात कर रहे थे ना और मेंस की बात कर रहे थे, जब जिस तरह से सभी ने साधुवाद दिया, सभी ने बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक विश किया, तो वो सभी खिलाड़ी भी देख रहे होंगे कितनी एनर्जी और किस तरह का एंथुसियाज्म नजर आ रहा है। जरूर हमारे साथ तेजस्वी सिंह गहलोत साहब भी वहाँ मौजूद थे, और राजस्थान स्टेट और भारतीय कबड्डी को इन्होंने और इनके पिताश्री ने और इनकी माता जी ने बहुत कुछ दिया है, और आगे भी इन्होंने हमेशा कहा है कि पूरा समय कबड्डी को देते रहेंगे। बट अभी समय सिर्फ 7.5 मिनट बचे हैं नवीन, आधा हाफ हो चुका है पहले हाफ का। Yeah, definitely. As Akshay Desai will want to just correct a little bit of a taping out there. Yeah, that's all. Right, so already the mat is starting to face the heat. Right, you spoke about the wishes of all the men players coming in and wishing the women. That shows the sport. See, as I always keep saying, hands down, let's accept it. If not women, we are nothing. We are zero. We are not there if women are not there. That's it. As simple as that. So, as per the motherly love we get, as per the sisterly love we get, and as per the companionship that we get from everybody, the life goes on only from women. And now, Himalayan Tahrs are going in only with Pushpa once again on that left corner. Gyanu has to go back. Toe touch and no ankle hold there. Look at this. Wow. बहुत अच्छा अटैक, बहुत अच्छा अटैक। तो जब तक राइट कॉर्नर थोड़ा सा फेयर अप नहीं कर पाएंगी पुष्पा को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पुष्पा को रोकना वैसे भी आसान नहीं है। Totally. Yeah, the rule was there. The rise was, of course, there. Now it's going to be the time for the rule. Pushpa to the rule, and she's going to rule here. Is it? Yes, Nidhi does it. Nice turn. Angle of dash was too far from Jyoti, and turning around towards the lobby makes sure the point goes into the radar. Harshit, with all those wishes that came in, Nidhi, as you said, turning was very nice. My favorite was, you know who that is, Mr. Yogesh, the man who's always there, the third Nagar. He was very, very sweet as a coach. I think he was sitting in his office. Yeah. Somewhere. Casuals? Yeah, he was in casuals as well. He was sitting in his office and wishing. Again, Bhavna gets another red point. And Aravalli now need to get a little tighter and tighter. They're losing players on the mat. जहाँ उनके इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स वहाँ पर बाहर मौजूद थे, और ये बहुत ज़रूरी कि अपने डिफेंडर्स का सही समय पर रिवाइवल लेकर आए। तो क्या कभी-कभी बहुत ज़्यादा
डिफेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर देता है। हमने बहुत पहले भी बात की है और आने वाले समय में बात करेंगे, बट रेनू देसवाल मुझे लगता है ये एक ऐसी रेडर साबित हो सकती है जो अरावली एरोज के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क डन कर सकती है। एक अच्छी लंबे कद की रीडर है और साथ ही साथ काफी अजाइल भी हैं, बट यहाँ एजिलिटी के साथ साथ आपको टाइमिंग्स के साथ साथ और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। यहाँ पर शिकार बनाया हिमालयन थार्स ने। And once again the cover is coming in combination, isn't it? They know that Renu is a tall raider. They had to come around. Look at that right cover and also the left corner. The combination of the tackles and wonderfully done. And that is what you need to see, isn't it? Where the combination is absolutely correct and no defense point yet for the Aravalli Arrows. It's a super tackle situation. Once again, not easy to stop Jyoti. Muskan needs to understand that combinations is what is needed. Manpreet and Muskan, both of them. Yeah, now the coach is getting a little nervous, probably Sohanji. क्योंकि बहुत दूर से अटैक कर गए थे। हम कहते हैं ना कि रीडर्स को अपने पास आने दीजिए, और मनप्रीत इस बार गलती करते हुए नजर आई। और मुस्कान जब तक थोड़ा बाहर जाती है, मुस्कान मलिक तब तक थोड़ा परेशानी में आ जाती है अरावली एरोज, और अब ऑल आउट के बहुत करीब है। निधि की एक बार टर्न यहाँ पर कारगर साबित हुई थी अरावली एरोज के लिए, बट हिमालयन थार्स का डिफेंस बहुत पीछे मौजूद है। और इसीलिए देखिए नवीन, हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमालयन थार्स की बात करें, वुमेन्स कबड्डी में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और बहुत ही अच्छा कार्य रहा है। राइट कवर आज बिल्कुल हर चीज इन राइट टेंडम करती हुई नजर आ रही हैं। Dimple Ramlal has definitely brought a smile along with the dimple on Himalayan Tahrs supporters' face for definitely the third time. This is the third time she's coming in with a combination of tackle, and look at that aggression. Yeah, right, that is Dimple. And after the attack, yeah, she's all cool and fine. She'll just take a breather as Pushpa once again walks in. In that all out, Harshit, if somewhere Aravalli Arrows could understand one thing is the defense points. You know, if they don't get the combination right, because their covers look a little out of clue. They don't have that plan. They don't have the clue. Again, going into attack only from the left corner. She was asking the bonus there, Pushpa. They have the review, mind you. One review per match if they want to. I don't think so they'll go for it. Again, it's that attack without a plan. There, see, near the balk line. और बिल्कुल एजिलिटी के साथ गिली, जो कि हमारी मैस्कॉट है, बिल्कुल उसी की तरह निकल गई अचानक से। और टाइम लगाना नवीन मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर विकल्प इस समय हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं आ रही है पुष्पा। वहाँ पर बॉक लाइन के आसपास खेल रही है, लेफ्ट कॉर्नर को टीज कर रही है या फिर टो टच कर रही है लेफ्ट एंड पर। अब निधि शर्मा को यहाँ पर रोल निभाना पड़ेगा। निधि शर्मा को टच पॉइंट्स लाने पड़ेंगे रेड में, कि आप डिफेंस को उतना कमाल का सपोर्ट दे पाएं। लेफ्ट कॉर्नर की डाइव जरूर आई, बट गलत टाइमिंग के साथ आई, थोड़ा सा गलत फ्रेम को चूज किया उन्होंने। Yeah, Champa Thakur. Again, even on that timing, as you said, she was going away from the balk line there. After the bonus, she was going away from the balk line. And as I said, it is a shorter court for the women's. Yes, that is the rule. 11/8 only. So it's that shorter court. And that's why I always go back to speak about the size of the court along with Mamta Pujari, the greatest kabaddi player there from Karnataka, Arjuna Awadi, one of my very close friends as well. She tells it's so much on the taller raiders. There, once again, I think it's a couple of points. Jyoti, Muskan first went in for the ankle hold. Yes, and then the left cover, Manpreet came in. So once again, there's no combination for the Aravalli Arrows. Muskan, Manpreet, both needs to go out. Harshit, it was vice versa. See, first the cover had to attack, then the corners. But here, see what happens. First the corner goes in, and then the cover comes across. So it was that vice versa attack that got in Jyoti. So yeah, just going back to that story of Mamta Pujari speaking to me so much about the size of the court. Mamta is around 6 feet tall. Pushpa! As I told you, she is an all-rounder. There you go. And don't ask me back, Harshit. Why don't you expect or accept Anuj Saini as an all-rounder? There. Now did you prove my point, right, Pushpa? वाओ, जस्ट लीथल। देखिए आप जिस तरह से जैसे बोनस का प्रयास करने के उसी समय पर पुष्पा सोलो डैश पावर का जिस तरह से बुलडोजर उन्होंने किया, एक तरह से वो बिल्कुल कमाल था और बहुत ही लाजवाब अटैक वहां पर किया। 18-8 नवीन। हिमालयन थार्स एक बार फिर से 10 अंकों की लीड तो है ही, बल्कि अरावली एरोज मोमेंटम बिल्कुल नहीं दे रही। बट यहाँ पर पहला पॉइंट आया है, यहाँ पर डिफेंस में पहला पॉइंट आया है अरावली एरोज के लिए। ज्ञानू वहां पर मौजूद थी, जैसे ही ज्यादा अंदर चली गई रेडर, उन्होंने उस समय पर डाइव लगाई। I think Bhavna is taken a little casual because she went in too
too much deeper inside the court on that left corner there. She did not understand Gyanu can come in and attack. Previously, she got a raid point, Arshit. That was via a toe touch. Now she went for the hand touch. And that is where Gyanu got the angle and the first tackle point for the Aravalli Arrows. Yeah, you speak of taller raiders, as I was speaking, Mamta Pujari or Tejaswini Bai, or there are so many players we've seen them do well. All that Mamta says is she's 5'9", if I'm not wrong, not 6 feet probably. Now what she says, even if I fall away from the back line, I can move away and go in and cross the midline. As that is what the strategy is. So what should the defenders do? Defenders come in combination and attack. See, more than the men, the women kabaddi needs the combination on the attack more, because you never know. Wow, this was a solo tackle, and I think Pushpa was also getting a little tired. That's the first time she's going out on the mat from the bench to say that Aravalli Arrows have probably now gotten Bhavna and Pushpa both. इंपॉर्टेंट टैकल और मुस्कान वहां पर मौजूद थी, बहुत ही अच्छा सिंगल थाई पर अटैक किया। पहले हाफ की यहां पर समाप्ति हुई है, जरूर डबल पॉइंट्स के साथ लीड पर जरूर आपको हिमालयन तार्स नजर आएगी, बट अरावली एरोज ने अंत में आते आते जो दो बड़े इंपॉर्टेंट टैकल पॉइंट्स लिए हैं उससे कहीं ना कहीं मैच एक बार फिर से पलट सकता है, बट पुष्पा को पूरा क्रेडिट जाएगा। 6 रेड पॉइंट्स उन्होंने अर्जित किए और डिंपल रामलाल देखिए 3 टैकल पॉइंट्स वहां पर अर्जित कर चुके हैं कवर के तौर पर। Fabulous. As I always keep mentioning about Pushpa, the next plate will also show us how Aravalli Arrows have gone in and attacked the Himalayan Tahrs unnecessarily. Lot of hasty tackles, lot of advanced tackles, not settling down, and even those 2 tackle points that came in, Arshit, yeah, as I said, see, 12 attempts out of which only 2. That also came in as solo tackles. There was no combination there. One on the left corner, one on the right corner. That's it. Apart from that, nothing. So, and look at the Himalayan Tahrs on the other side. Only 9 attempts, out of which they've got 4. That means they have come in with a combination and a plan, especially Dimple Rampal, along with the covers, with the left cover also doing really well. But that dash from Pushpa, my God, that was humongous to see, where she went in solo and put a tall raider like Jyoti out. Now, speak of tall raiders, as I said, see, let's also look at these high pointers. See, Pushpa's not too tall, but what she has is that agility. What she has is that speed. That's the first point of JSG Women Yuva Kabaddi series, and that should have definitely been Pushpa. Apart from her, who else? That was a do-or-die raid point as well. And also, how they are going in and attacking Pushpa is what has been seen here in this first half's visuals. There, she's got all the skills. She's got the cartwheel, she's got the usage of the lobby, she knows how to turn. And Sohan, he is under pressure. I know him very well as well. Sohan, he is a cool, calm coach. He will probably give a lot of time for his players. But the only point is they need to understand to attack in combination. That's the only thing. Now they can do her shit because no Bhavna, no Pushpa for Himalayan Tahrs. तो ये शायद परफेक्ट सिचुएशन है जहां पर वो काम कर सकती हैं और परेशानी में ला सकती हैं हिमालयन थार्स को। अब देखते हैं कि कौन वहां पर रेड पर जाती हुई नजर आएंगी। रजनी गई है, रजनी यहां पर अब रेड पर जाती हुई नजर आ रही है। 5 का हाउस है, मल्टीपल रेड के पास, जैसा हमने बात वहां पर की। 10-18 का यहां पर स्कोर है और दूसरा हाफ यहां पर शुरू हो चुका। आइए दर्शकों एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हैं। JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 एक बार फिर से जयपुर गुलाबी नगरी में हम सभी मौजूद हैं और ज्योति कुमार इस बार रेड पर आती हुई। Yeah, Ashit, we've been speaking about the Pink City, but you being born and brought up here, give us the correct reason. Why is it actually called Pink? What is the history behind that? I mean, जब आप परकोटा, जिसे आप कहते हैं ना सिटी एरिया, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको सारी बिल्डिंग्स पिंक कलर में बनी हुई नजर आएंगी। जो बड़े बड़े किले हुआ करते थे वो उस समय राजा महाराजों का बड़ा पसंदीदा कलर था पिंक, और इसी के चलते वहाँ पर पिंक सिटी का नाम दिया गया है। और जब आप उन बिल्डिंग्स को देखेंगे अभी भी वो पुराना आर्किटेक्चर वहाँ मौजूद है, थोड़ा सा रिनोवेशन जरूर किया गया है, बट अभी भी वो जो कलर है वो बिल्कुल पिंक सिटी को बहुत ही शानदार बनाता है। जैसे हिमालयन थार्स का थोड़ा सा पिंकिश जो फ्लेवर है वो नजर आ रहा है। And also they are leading, no doubt, with 8 points. But you spoke about the architecture, and what I love about now Jaipur is they've converted all those forts into some lovely, amazing hotels, and that gives us actually a feel of
what the Rajas and Maharajas have actually enjoyed in their heydays. My God, if now it is so nice, just imagine, say 50, 60 years ago, or rather 100 years ago, how nice those palaces would have been, how nice that, entire arena would have been. And that is why we love Jaipur so much. And along with that, my favorite always has been Hawa Mahal, as she's outside Pushpa. They need to revive her back. It's a do-or-die raid. Diving Rajini Gulia doesn't get it. And they surround her. They surround her. The moment they see that there is no footwork and they've surrounded her, and Pushpa will be revived. Probably is it? No, I think she'll come in next. हवा महल की आप बात कर रहे थे, हवा महल के बीच से निकलकर जाना, जैसे कबूतर वहां से उड़ा करते हैं उसी प्रकार से उड़ना था, उड़ान भरनी थी यहाँ रजनी को, पर वो चेन को नहीं तोड़ पाई। और फिर से आज हिमालयन थार्स में एक चीज बहुत अच्छी नजर आई है कि चेन में अटैक किया है उन्होंने, चेन में हंट किया है। अब कृतिका आई है, कृतिका डू और डाई रेड में देखते हैं कि क्या अरावली एरोज के 5 के हाउस को भेद पाएगी, क्या इस किले को यहाँ पर भेद पाएगी, या फिर यहाँ अटैक आएगा। ज्ञानू की तरफ से अटैक आया, थोड़ी सी बैक दिखा दी थी नवीन, और जैसे ही वहां पर बैक दिखाई तुरंत अटैक किया ज्ञानू ने और शिकार बनाया कृतिका का। And also she was blinded there. That was a problem. Probably did not turn around too much. And the blindingness of Gyanu from Kritika, that is what the problem was. Right. Now Kritika herself comes in. It's not a do-or-die raid. I'm sorry. This is not a do-or-die raid. The previous one was for both the teams. That's done. And now Bhavna has been revived. There. She's come back as Pushpa will be coming in next, because Bhavna was the first one that was being tackled out when she was going into the raid. And also nice to see Vikas, the CEO as well, putting his efforts behind this JSG Women's Yuva Kabaddi series, as Bhavna, she wants to now revive Pushpa somehow, probably just not trying for the bonus point. And unless and until they get Pushpa back, it's an easy way out there for the Aravalli Arrows. And they need to capitalize on this. That's the Aage ka rasta for the Aravalli Arrows. No bonus point. So that'll be an empty raid. So unless and until Pushpa comes back in, Aravalli Arrows can make much use of it. And for that, Renu Deshwal should raid very quickly. She can't take her time. और रेनू देखते हैं कि अब इन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, पहला टच पॉइंट अपनी पहली रेड में अर्जित किया था, उसके बाद ज्यादा इन्हें चलने का मौका दिया नहीं है। 5 के हाउस में तेज जाना होगा, क्या यहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस कर पाई थी सही समय पर या फिर नहीं? जी बिल्कुल नहीं। बहुत ही पावरफुल डैश वहां पर किया गया है। जरूर अक्षय देसाई साथी रेफरीज के साथ कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे, या फिर रेनू शायद रिव्यू चाहेंगी। क्या ये पहला रिव्यू नवीन JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 का आ रहा है? I think they also might be discussing if a defender has gone outside the end line. All contentions possible. I don't think so. Renu might be reviewing this one, because yes, there is one review per match. Akshay Desai will play each 1 point. Is it? No, raider out. Do they know that they can go for the review? They can. They are experienced. They know that the rule exists. But Renu doesn't want to challenge it. She does not go out of the end line, the left corner. There. That was the contention first. Akshay Desai first gave a clear indication that yes, the raider was out. And it was a point out there for the Himalayan Tahrs. But just the contention of the left corner. Did she step outside was the question, but no was the answer. As Bhavna once again comes in. Bhavna also has that strategy, Arshit. I've seen them attack in pairs, as I said. Pushpa does the first half's job generally, and Bhavna goes in for the second half's job. So that is what they do every time when they play together. And that is what, of course, Satvir Kaur, the coach of Himalayan Tahrs, also would have told them. See, even when, Pushpa is revived, it's Bhavna who's going in. See, Pushpa is right there in that left cover this time, along with Dimple on the chain. But they want to just keep Pushpa out there for the last 6 minutes, as Nidhi will go back empty-handed. निधि इस बार वापस आती हुई एम्प्टी हैंडेड। पॉइंट्स लाने बहुत जरूरी है अब यहाँ पर अरावली एरोज के लिए, पर बहुत ही अद्भुत कार्य यहाँ पर रहा है अभी तक हिमालयन थार्स की तरफ से। अब पुष्पा शायद सोच रहे हैं कि क्या ये दूसरी रेड है मेरी, पूछा था उन्होंने, बट वहां पर बताया कि जी नहीं, ये तीसरी क्या रेड है। 6 पॉइंट्स ऑलरेडी अर्जित कर चुकी हैं। She's still indicating that it's a second raid of the team, but no, Pushpa, I'm sorry. This is a do-or-die raid. You will have to get points, and she will get it. Hand touch on Gyanu on that left corner. Oh my God. Ankle holds are being a problem here for the Aravalli Arrows. Gyanu now just needs to apply that more Gyan in the ankle holds. Yeah, she's not done it. She's not done it.
और नी पर टच हुआ, जैसे वो नी को अपना पीछे ले जाने चाह रही थी उसी समय पर नी पर जाकर वो टच हुआ और पिछली डू और डाई रेट थी सर, वो शायद एम्प्टी रेट करने के हिसाब से पहले पुष्पा जा रही थी, हालांकि 2 बार उन्होंने रेफरी से कंफर्म किया, बट और कहीं गलतियां हो सकती है नवीन। बट युवा कबड्डी सीरीज ऑफिशियल्स के पैनल की अगर हम बात करें तो इंसान जरूर है, गलतियां कभी कभार हो जाती है, बट जिस तरह से वहां पर परसेंटेज रहा है सक्सेस का वो बहुत ही लाजवाब रहा है। सुषमा पहले इनको कवर ने शिकार बनाया था, बट क्या यहाँ पर कोई टच पॉइंट ला पाई हैं? जी हाँ बिल्कुल, 1 अंक इन्होंने अर्जित किया है, वो शायद बोनस का किया है। Yeah, you rightly mentioned, yes, human error is always an option, but I'll tell you why the Yuva Kabaddi Series' official panel is so very correct, because they accept the mistake first. That is what we don't see in most of the other places, or probably in the life as well. First of all, if you accept what it is already happened, what is wrong, which is already done and dusted, you will come back and correct yourself. If you don't accept your mistake, that will be a problem, as Dimple has got that 100% tackle strike rate today as another bonus point for the Aravalli Arrows. That's not going to cost too much. So every time, once again, look at this bonus point. Beautiful. Landing foot over the bonus line, trailing foot in the air. Good execution. So unless and until they don't accept the mistakes, they might not do well anywhere. That is what is very good, say, about Akshay Desai or Nandini for that matter, or Sagar Panchal. Everybody getting in. They come out of the mat, they discuss it out and say, oh, okay, this is what I did and this is what I should not have done. And how many times have you seen umpires coming in from all the corners of the kabaddi mat, in the center of the mat, have a round center discussion on the kabaddi mat? Generally doesn't happen in many of the other competitions. And this happens from the beginning of the competition. Lovely combinative tackle. Beautiful work. मिक्सचर नजर आता हुआ दोनों ही खिलाड़ियों ने यहाँ पर जिस तरह से पहले अटैक की शुरुआत की, और डिंपल की हमने पहले ही बात की थी कि 100% टैकल सक्सेस रेट उनका रहा है, बट इस बार चंपा आई वहां पर लेफ्ट फ्लैंक से अटैक करने आई और एक बहुत ही अच्छा अटैक वहां पर करती हुई नजर आई। बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन वहां पर। डू और डाई रेड होगी इस बार। भावना आएंगी हिमालयन थार्स की अगर आप बात करें तो अब डू और डाई रेड है। भावना देवी अब वहां पर आए हैं, किस तरह से अटैक करने जाएंगी। 3 का हाउस है, क्या यहाँ पर बाहर जा चुके? तुरंत बिल्कुल लाइन एम्पायर ने कहा कि बाहर आपको आना पड़ेगा मुस्कान। अभी इनके चेहरे पर जरूर मुस्कान नहीं होगी, बट हिमालयन टार्स की ये खिलाड़ी खुश हैं। Muskan Malik. Speaking of the combination in the attack, even on the defense, you need to hold your hands together very well. But then that left leg going too wide across outside the end line was a problem. Muskan, yeah, as you said, no Muskan as of now. And I think in the do or die rate strategy, Himalayan Tahrs have got 100%. I think they've got 3 do or die rates as of now in the entire match until this 25th minute. So they've gotten all the do or die rates correct. So that's very good. Couple of times it was, of course, Pushpa going in and getting points. And the others have supported her well, and the other teams are lining up for their next match. It's a super tackle. She wants to clean it up, Harshit. That's for sure. She will be eyeing for an all-out. There. And look at the cartwheel escape. 1 point only, but. बहुत अच्छा अटैक, बहुत ही तेजी के साथ अटैक करते हुए नजर आई। मनप्रीत वहां पर शायद राइट कॉर्नर से अटैक करने आ रही थी, पहले वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ ज्यादा गई और यहां जब टच नहीं हुआ और जब उन्होंने मनप्रीत को आते हुए देखा तो अपने सडन चेंज ऑफ प्लान किया और तुरंत जैसा आपने बताया कार्टव्हील मारते हुए दूसरे गियर से सीधा चौथे गियर में पहुंचते वहां पर अपने होम कोर्ट में पहुंची। अब निधि शर्मा इकलौती यहाँ पर मौजूद हैं। अब निधि देखते हैं कि किस तरह से क्या रिवाइवल ला पाएंगी। यहाँ अटैक करने जा रही थी, थोड़ा सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस बनने जा रही थी, बट यहाँ पर सरप्राइज उन्हें मिला है। बाहर उन्हें जाना पड़ेगा और अरावली एरोज को एक चिंगारी दी है। डूबते को तिनके का सहारा होता है नवीन, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का सहारा है। Yeah, Bhavna just tried it a little too early. That was a problem. If she could have just held her nerves back, that would have been really nice. Yeah, as you said, they escaped the all-out, but this time, Pushpa, she'll come in and probably clear it out this time, all out. Yes, she says sorry as well for hitting, I think, the player too hard while going back. That shows the sportive spirit. That shows the respect. I love that, Arshid. No matter how big a player you are, you just need to
understand that you need to respect the other players. There. She was very apologetic because her hand hit her cheeks. She is completely, fully, loudly saying sorry. बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे वहाँ पर अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ हो तो आप क्षमा मांगे। पर अरावली एरोज यहाँ पर थोड़ा पीछे जा चुका है इस मुकाबले से। 13 अंकों की बढ़त हिमालयन थार्स के पास है। रजनी गुलिया बाहर गई हैं, राखी को अंदर बुलाया गया है। निधि शर्मा रेड पर हैं। I mean, शुरू में क्या एक रेडर को सेट होने का मौका अरावली एरोज के प्लेयर्स ने नहीं दिया, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम देख रहे थे मल्टीपल चेंजेस थे और पुष्पा और भावना वहां लगातार ये दोनों ज्यादा रेड्स पर लगा रही थी। तो क्या थोड़ा सेटल अच्छी तरह से हुई हिमालयन थार्स की रेडर्स, उन्होंने ज्यादा रेड्स लगाई और अब देखिए ज्योति भी अच्छा कर रही हैं। Harshit, what did I say? They always hunt in pairs. That's what I said, isn't it? Where Bhavna and Pushpa, they know what the team needs. And Jyoti being that support raider will just come in whenever is needed. But you speak of support, it wouldn't have been possible with all the big supports from, of course, a broadcast partner, Fancode, and all the other partners. We do have a healthcare partner, Mangalam Plus, Medicity, Jaipur here. And then let's not forget our physio partner as well. And this is a partnership attack. This has been a hallmark once again from the left cover. Dimple and Bhavna, I think this time is getting in together to put out the tall raider Renu. Yeah, no, Pushpa and Bhavna. There you go. My God. You just can't keep them away, is it? I thought it was Dimple and Bhavna, but no, it was Pushpa from the left cover. And yeah, speak of physio partner, JSS College, Physiotherapy of Mysore, and we have a health snacking partner, the Flavor of Republic. Also a pain relief partner called Hoop. And that was a painful tackle. No relief there for Bhavna. Nice tie hold. And that'll give some relief to the Aravalli Arrows. Again, Arshit, solo tackles. जी हाँ, ये थोड़ा सा बचना बहुत जरूरी है और जरूरी तो अटैक बहुत अच्छा था, अच्छा अटैक वहाँ पर किया, कवर पर मौजूद थी पर थोड़ा सा देर आए हैं और पहले हाफ में भी हमने सिर्फ 2 मिनट के अंतराल में 2 टैकल पॉइंट्स देखे। अभी भी अंतिम 2 मिनट का समय शेष बचा है, तब अरावली एरोज के लिए डिफेंस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। रेडर्स को पॉइंट नहीं मिले हैं जरूर। निधि शर्मा की अगर आप बात करें, 5 टच पॉइंट्स, 5 बोनस पॉइंट वहां पर ले जा चुके निधि शर्मा और अपना सुपर 10 बना चुके हैं। क्या ये पहली खिलाड़ी बनी है JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज में जिन्होंने पहला सुपर 10 बनाया है? निधि शर्मा। Yeah, definitely a player to watch out, and also a raider that can bring in a lot of hopes. Once again, kicks Kiran away, gets her 11th point. Yeah, we just saw Kalidas out there. He's there sitting on the sidelines. A big unfortunate incident in his house. That's why he had to trounce his head, shave his head off. Of course, Pushpa. How can you not forget Pushpa scoring a super 10 along with Nidhi Sharma? And what I always like is more touch points than bonus points. That's the impact what Pushpa has got. 8 touch points, probably the 3rd bonus point as well. Not letting her take that easily, but still they're not even going for the ankle hold. Under a minute, Arshit, already. And did you realize that one with all the talks that's going in? As you expected more from Renu, isn't it? Along with Nidhi, you did expect more from Renu, being the lead raider. Probably first match, get it settled in, but no time to relax. That's a problem here because we're looking at only 6 days of matches. 26th is the finals, so you don't have too much time. Once again, the combination of the tackle, brilliant. And other teams watching, Palni Tuskers and everybody, yeah, watch out. This is a combination that you need to escape about. Look at the way, frontal block there from Champa, and Pushpa goes to the legs. Except her, the all-rounder. वाह, बहुत ही बेहतरीन और स्टिक टू द बेसिक। कभी-कभी खिलाड़ी वो बहुत ज़्यादा आप ओवर ट्राई करने लगते हैं और ये हिमालयन ताज ने सिर्फ बेसिक पर स्टिक किया है, कोई रणनीति में बदलाव नहीं किया। जैसा वो यूजुअल खेलते हैं बिल्कुल वैसा ही खेले हैं और यहाँ देखिए स्पीड, sheer स्पीड डन द डैमेज। नवीन यहाँ पर एक खिलाड़ी को पहले टच हो गया था, इसलिए साथी खिलाड़ी बच गई क्योंकि इन पर टच किया। लेफ्ट कॉर्नर की खिलाड़ी ज़्यादा बैलेंस अपने आप को नहीं बना पाई और यहाँ बाहर जाना पड़ा है। Yeah, totally. As I think the lensman also and it's match over. They're just moving it around. Probably. Deva and team, the PCR teams as well, will settle down in after the first match. But yeah, what a lovely combination this is for the Himalayan Tahrs. Raiding, defense,
and defense in the tackle. Everything is marvelous. Pushpa, Bhavna, Champa, Dimple, and don't forget, of course, we will keep speaking more about them. And only Nidhi Arshit. For me, Renu should have done well, but Muskan should have done well. Manpreet should have done well. I expected too much from them, but I think first match, they will go back to the hotel rooms and discuss and say, okay, this is what we need to do. This lackluster effect, no combination effect won't work out, as Mr. Sohan, the coach of the Aravalli Arrows, also will understand the same thing. Now, did you see Dhanshri actually wanting to take a blessing from Sohan? He's such a senior person out there. बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और हिमालयन थार्स 17 रेड पॉइंट्स 9 टैकल पॉइंट्स वहां पर अर्जित किए, 2 बार ऑल आउट किया अरावली एरोज, एक बार भी मुझे नहीं लगता कि 4 से ज्यादा कम खिलाड़ी वहां पर कर पाए हिमालयन थार्स की। एक अतिरिक्त पॉइंट भी मिला और दोनों ही टीमों में ज्यादा अतिरिक्त पॉइंट्स नहीं थे वहां पर नवीन, यानी कि अच्छी सेटल नजर आ रही थी। और जो आप 11/8 के कोड की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से एक्साइटमेंट से परिपूर्ण था ये मैच। Absolutely. And see what I said of the Himalayan Tahrs, the do or die raid. 3 times they were successful, only once they have not been able to get that do or die raid point. But yeah, on the whole, the defense of the Aravalli Arrows, 19 attempts, out of which they got only 4. That was a problem. And combination from Himalayan Tahrs, very good. And look at this. This is what the hallmark of any good team is. You don't have the top raider, top defender, who really wanted to shine there on the mat. With 10 points, of course, Pushpa and Bhavna also supporting her really well. But Nidhi Sharma, 11 points for her. Very good effort, as Nidhi Sharma wanted to go out there and do something for the Aravalli Arrows. Should have done more, but not enough. Not enough of what Nidhi Sharma actually did out there. Because more of bonus points in those 11 raid points. She's got 5 bonus points, which this graphical representation will not tell us on the numbers, but 5 bonus points will not reduce players from the opponent side. That was a very amazing fact where the numbers don't tell us. But Pushpa, yeah, as I always say, Jukega Nai, that's what she has done, and that's what I always tell. That when I saw her first time there in Lucknow, then in Ahmedabad, she is definitely a fire to watch out for here in the JSG Women's Yuva Kabaddi Series. But the best defender, Dimple, combinative tackles and also coming in with the chain tackles, very good. She's not too strong on the dash, but going in with the chain and going in as a combinative effort. Dimple, very well done. As Nidhi, we will look at what she did. As I said, Dimple Ramlal, 4 tackle points, 100% tackle success rate. That is because of the combination that she went in with the tackles. And let's look at her now from the right cover. There, she goes in with the chain, always does the job. Goes in with the chain every time, does not go out there solo, does not go out there without a plan. Every time she's got someone or the other in the chain. And she does it really well, only on the dash, only on that one dash. She had the solo dash coming in. Right, time now to go down to Harshit and probably look at the accolades for the first ever match here for the JSG Women's Yuva Kabaddi Series. We'll come back soon. With Murtal Magnets and Palni Tuskers, of course.
गुलाबी नगरी के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आइए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इन द फर्स्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ ऑफ JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 में। सबसे पहले स्पोर्ट्स मैच प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स, आवर ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड, हेल्दी स्नैकिंग पार्टनर द फ्लेवर रिपब्लिक, प्लेन रिलीफ पार्टनर हूब, आवर हेल्थ केयर पार्टनर मंगलम प्लस, मेडिसिटी हॉस्पिटल जयपुर, फिजियो पार्टनर JSS कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैसूरू। और चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम साक्षी बन रहा है इस ऐतिहासिक JSG वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज 2024 का। इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करते हैं हमारी गेस्ट। वी हैव अलोंग विद अस डॉक्टर मृदुल गहलोत मैम, फर्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ राजस्थान, एंड मैनी मोर feathers in her cup, and also wife of legendary late जनार्दन सिंह गहलोत। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं मैम, नमस्कार। और आइए स्पोर्ट्स मैच प्रेजेंटेशन की तरफ चलें तो पहला बुलंदियों को यहां पर छूता हुआ नजर आया ये मुकाबला अरावली एरोज का मुकाबला था हिमालयन थार्स के विरुद्ध, जहां पर हिमालयन थार्स ने शुरुआत सदी की बट अपने विलासपूर्ण प्रदर्शन को आगे लेकर गए और इस मुकाबले को जीता एक बेहतरीन अंतराल के साथ। 31-18 से अपने नाम किया है मुकाबला। आइए सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ। शुरुआत करेंगे फर्स्ट विद द बेस्ट रेडर ऑफ द मैच, जो रहेंगी अरावली एरोज के लिए द नॉन स्टॉप परफॉर्मर निधि शर्मा, जिन्होंने बनाया एक शानदार सुपर 10 और प्राप्त किए 11 रेट पॉइंट्स। आइए देखते हैं इनके दमदार परफॉर्मेंस को। और इन्हें जाएगा चेक के साथ एक शानदार सा हैम्पर बाय हुप, और बहुत सारा एक बार फिर से करते हैं कांग्रेचुलेट निधि शर्मा को फॉर बिकमिंग द बेस्ट रीडर ऑफ द मैच। आगे ले चलें तो समय है बेस्ट डिफेंडर की तरफ चलने का, और बेस्ट डिफेंडर के तौर पर हिमालयन थार्स के लिए जिस तरह से पहले हाफ में 100% स्ट्राइक रेट के साथ अपना एक ऐसा खेल दर्शाया कि जब जब इनके गिरफ्त में कोई भी अरावली एरोज की रेडर आए इन्होंने जाने नहीं दिया। ये हैं डिंपल रामलाल, जिन्होंने प्राप्त किए 4 अद्वितीय और अद्भुत टैकल पॉइंट्स और अपनी टीम की जीत में निभाई एक अहम भूमिका। आइए देखते हैं इनके शानदार टैकल्स को आपके साथ। चेक के साथ साथ एक शानदार सा हैम्पर बाय क्लोविया, और बहुत सारा करते हैं इन्हें भी कांग्रेचुलेट और आशा करते हैं कि इसी तरह की इनकी फॉर्म भी रहे आगे बरकरार। अब बात करेंगे सबसे खतरनाक और सबसे लाजवाब प्लेयर की। जब बात करते हैं कबड्डी कमाल मूवमेंट की और कबड्डी कमाल अवार्ड की, तो ये आज अवार्ड जाएगा हिमालयन थार्स की सबसे बड़ी थार्स, जिन्होंने आज फिर से अपनी टीम के पी के साथ लगाया एक और प्रॉमिसिंग और एक और प्रोमिनेंट। वो और कौन हो सकती है बल्कि पुष्पा राणा, जिन्हें लाजवाब प्रदर्शन दिखलाया, अपनी टीम के लिए ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया और सिर्फ शुरुआत में रेड में अपनी टीम को फायर स्टार्ट नहीं दिलाई बल्कि डिफेंस में भी निभाया एक शानदार स्थान और दिखाया अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत के साथ। आइए देखते हैं इनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस को। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दर्शा रही एक चेक से सिर्फ काम नहीं चलेगा बल्कि इन्हें भी जाएगा हैम्पर द फ्लेवर रिपब्लिक की तरफ से। कांग्रेचुलेशंस पुष्पा फॉर बीइंग अ वेरी फैंटास्टिक प्लेयर और अपनी टीम के लिए एक शानदार जीत प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, बड़ा लाजवाब था पहला मैच और आप सभी को बता दें कि आप सभी ने बहुत ही लाजवाब इंजॉय किया होगा मैच। बट अगला मुकाबला, जब आप राइवलरी की बात करते हैं, एक बड़ी राइवलरी इस बार वुमेन्स के मध्य उतरते हुए नजर आएगी। मुरतल मैग्नेट्स बनाम पलनी टस्कर्स। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।